Dear students, in this video we will study next topic of electricity and magnetism, section A, that is orbital magnetic movement of electron. Orbital magnetic movement of electron. Orbital magnetic movement of electron. Now we know that if electron is revolving around the nucleus, in this figure we have a nucleus here at origin of this three-dimensional system. Electron is here, which is at a distance r from nucleus. When the electron revolve around the nucleus, this revolving electron is nothing but equivalent to current. This current gave rise to magnetic movement. We have already studied, which is given by I into A. This A is area vector of this loop, that is orbit of the electron here. So making use of this expression, we will derive magnetic movement of electron which is revolving around the nucleus in a well-defined orbit. For this, let us consider an electron of charge, that is E, in fact it is minus E, mass m, mass of electron is m, rotating around the nucleus in circular orbit of radius r in xy plane. Now xy plane means x and y coordinates are parallel to this board, and this z coordinate is perpendicular to this board. Suppose electron is revolving in counterclockwise direction at any time. Suppose electron is here. Also, we know that when object is rotating in a circular motion, at any point its velocity is tangent to that circle at that point. So if we consider electron here, then velocity will be in this direction. If at this point it is in this direction, if at this point this is in this direction. Now suppose electron is revolving in a counterclockwise, anti-clockwise direction, and let V be the, I have already written here, B be the speed or velocity of revolving electron. Now suppose to complete one circle, let the electron take t time. So t is the time taken to complete one rotation. Time taken to complete one rotation is t. Now this t is given by t is equal to time taken to complete one rotation, which is circumference, that is 2 pi r, circumference of the orbit, divided by velocity v. So this time period is equal to circumference divided by velocity, because it is distance upon velocity.
Now motion of this electron, as I already said, is equivalent to current. Now current is equal to, it is nothing but rate of change of charge, it is equal to E upon T. Now for the time being I am taking magnitude, that is charge on the electron in a magnitude. So when we substitute this value of T, it comes out to be EV over 2 pi r. Let this equation be 1. This is equation number 1. Now orbital magnetic moment of electron is given by, already written here, orbital magnetic moment of electron is given by I into A. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता बेटा तो वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो होती है करंट इनटू ए. नाउ व्हाट इज दिस ए की है, ये ऊपर वेक्टर भी है. दिस ए इज नथिंग, इट इज वेक्टर एरिया ऑफ ऑर्बिट. वेक्टर एरिया ऑफ ऑर्बिट है, दैट इज A, and its magnitude is pi r square. This is magnitude, and it points in negative z. Z is positive z is here. Negative z means into the board. Negative z axis, negative z axis डायरेक्शन विच पॉइंट करेगा. सो इसका मतलब जोड़ा ए हो गया, दैट इज इक्वल टू, दिस ए इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू के कैप. के कैप इज यूनिट वेक्टर along z axis, negative sign means it is along minus z axis. Now this is equation number 2 and this is equation number 3. Substituting the value in this equation, also substituting the value of current and A in this equation. जो substitute करेंगे, substitute value of A and I in equation 2. Here from value of A from here and value of I from here. आ दोनों वैल्यूज़ नूं आपां इहदे विच जो सबस्टिट्यूट कर दिंदे आ राजे तां अपने कोल रिजल्ट आ जांदा है. वैल्यू पुट करदे आ EV over 2 pi r multiply by minus pi r square into k cap. ओके ये आ गया अपने को. जो आप थोड़ा बहुत इनू सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई मतलब आर नू आर ना कैंसल कर लाँगे, ये एक के कैंसल हो जाएगा, एक आर कैंसल हो जाएगा, तो वी आर लैफ्ट विद माइनस ई वी आर ओवर 2 into k cap. दिस इज magnetic movement, value of magnetic movement of the electron. So ये आ गई अपने को एक एक्सप्रेशन. नाउ नैक्सट की कर रहे हैं असी जी मैगनैटिक मूवमेंट है. नाउ जो इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, इट आल्सो पोजेसेस एंगुलर मोमेंटम. हुण आप एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रैशन फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं इन्होंने आपस में की रिलेशन होता है मैगनैटिक मूवमेंट से एंगुलर मोमेंटम का. सो आ एक्सप्रैशन आप फाइंड कर ली. नाउ थोड़े जिहा मैं रब कर रहे हैं, होपफुली तुसी इसनूं नोट कर लिया होएगा. एंड रबिंग दिस, नाउ व्हाट इज angular momentum of revolving electron is equal to cross product of radius vector and linear momentum, that is r
cross P. Now P is nothing but M into V. So R cross M into V vector. This is L. Okay. Now according to right hand thumb rule, if velocity means particle is moving in this direction, it will point in this direction, means along positive z axis. So L is equal to mvr into k cap. This is also into sin theta. We will solve this value of this sin theta. Now look at this figure. R is in this direction, V is in this direction. So angle between them is 90 degree. इन्हां विच 90 डिग्री का एंगल है. सो 90 डिग्री का एंगल है. आर ते एम दे विच ते साइन 90 कितना हुंदा है 1. साइन 90 बेटा हुंदा है 190 डिग्री. सो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम बी आर इंटू के कैप. 6 नंबर इक्वेशन इनू डिफाइन करते हैं आप. 6 नंबर इक्वेशन. नाउ 4 नंबर एंड 6 नंबर. It was 5 number and this equation is a 6 number. 6 number. What MBR and 6. What I am doing? I am dividing this expression by M and multiplying this expression by M. So this MBR into K cap is nothing but L. So from equation 4 and 6, this mu m is equal to minus E into L over 2m. This is the relation between magnetic movement and angular momentum. So this equation shows that negative sign here shows that this angular momentum is pointing along positive z axis, whereas this magnetic moment is pointing in negative z axis. This is the only difference between these two, or we can say the direction of these two vectors, that is L and mu, are opposite to each other. If magnetic moment is pointing in this direction, it means angular momentum will be in negative z axis or negative direction. So this is the orbital magnetic moment of electron and its relation with angular velocity. Next, in addition to this article, we are doing some another definition. What is Bohr magneton? We use this equation to define what is Bohr magneton. What is Bohr magneton? Bohr magneton. Bohr magneton. Now what is Bohr magneton? Now we know that orbital magnetic movement of electron revolving in around a nucleus in a well-defined orbit is given by this equation. If we take magnitude of this equation, we obtain in magnitude. This is in magnitude. In magnitude we have this. Also, according to Bohr theory, Bohr theory की कहती है? According to Bohr theory,
According to Bohr theory, an electron can rotate in those orbit for which angular momentum is integral multiple of quantity h over 2 pi. I repeat, मैं दोबारा repeat करदा. According to Bohr theory, an electron can rotate only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h over 2 pi. ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? ਇਹਦਾ मतलब if L or capital L is equal to nh upon 2 pi, where n is 1, 2, 3 and so on. ਜਿਹੜੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ n is equal to 1 ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, n is equal to 2 ਸੈਕੰਡ ਔਰਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਹਰ ਉਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਨੇ, ਹੋਰ ਔਰਬਿਟ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ E n h over 2 pi m. E n h over 2 pi m. 2 pi and 2 pi 4 pi m, sorry, it is 4 pi m. n आ जिहड़ी टर्म है पूरी इहनूं मैं ब्रैकेट च लिख रहा. This E h upon 4 pi m is nothing but mu b. Mu b की हुंदा है? It is Bohr magneton. It is called Bohr magneton. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ. ਨਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਮਿਊ ਐਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਇਨਟੂ ਮਿਊ ਬੀ. ਨਾਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज का मतलब की है? डिस्क्रीट स्टैप्स दे विच वो वधदी है जिस तरह पौड़ियां दे स्टैप्स होंदे ने. n इज इक्वल टू 1 है तो म्यू भी आएगा, जे 2 है तो 2 म्यू भी आएगा, फिर 3 म्यू भी आएगा. आपस में इन्हां दा डिफरेंस है जिहड़ा इक्वल अमाउंट होगा दैट इज बाय म्यू बी. जिहड़ी इहदी न्यूमैरिकल वैल्यू हुंदी है बोहर मैगनेटॉन की न्यूमैरिकल वैल्यू है जिहड़ी ये वैल्यूज़ ने जिहड़ियां आपां इलैक्ट्रॉन की आपां म्यू बी की जगह पर पुट कर दईए ई एच अपॉन 4 पाई एम. मास ऑफ इलैक्ट्रॉन कितना हुंदा है? दैट इज़ 9.1 10⁻³ kg. एच की वैल्यू आप पुट कर देने, दैट इज़ नथिंग बट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.6 10⁻34 joule second. And then next is E. E is 1.6 into 10⁻19 कूलम हुंदा. वैल्यू सारियां पुट करते हैं तो अपने कोले म्यू बी की वैल्यू है जिहड़ी वो आ जाती है 9.3 10⁻24 इंटू दैट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बोहर मैगनेटॉन. सो बोहर मैगनेटॉन इज़ यूज्ड एज a unit for measurement of atomic magnetic movement. So this is all about your orbital magnetic movement of electron and then definition or expression of Bohr magneton. Thank you beta.